Our top focus story on the broadcast: rescue operations currently underway on day 3 at the tunnel at Tapovan. There are between 35 to 40 people feared trapped inside. It's a race against time to rescue them. There was an attempt made from multiple sides today, but they met with limited success. Let's take a look at all the rescue operations that have been conducted so far. There is also the added threat of water level rising inside the tunnel. And what would this mean for those who are trapped inside? Manjeet Singh Negi and I bring you our top story on India First. It's a race against time. Men and machines are pushing the limits to rescue 30 people still trapped inside the Tapovan tunnel in Uttarakhand. Rescue teams worked through the night to try and get into the tunnel. On Monday, using heavy machinery, they managed to clear the mouth of the tunnel, but found that the slush and debris was deep inside. Main effort is on this inlet edit. Now this inlet edit is almost 180 meters from where there's a diversion which goes. Now what we are hoping is that we have people here who are working, and this is the place which we expect that we'll have a cavity and people will be stuck here. Our main approach is to reach this at the fastest time. To give the rescue team a better view of the terrain, specialized electromagnetic depth radar was pressed into action to gauge the extent and depth of the damage. Now, this is a radar that is underslung a helicopter. Scientists of the Department of Earth Sciences, they are on board carrying out a study. What they want to figure out is the extent of damage. Now, if you look in this area just here, the slush is 50 meters in places, could be even more. Are there air pockets? What is the extent of the damage right from the point where the glacier, a part of the mountain broke, caused a flash flood, led to devastation all across? It is meant to discern the laser imaging and electromotive pulse. So this device, in case it gets through, it will make us understand whether the pocket is available and where it is available. In case we get to know that, so we have other means available to go through. The rescuers are also studying images taken by a drone camera which was deployed inside the tunnel. Earth movers and excavators are working non-stop to bring out debris from inside the tunnel. Teams of the Army, Indo-Tibetan Border Police and NDRF are working in tandem to clear the debris. Now, a scientific process, according to the Uttarakhand government, is underway for finding out the damage, steps that need to be taken, and then a roadmap for rebuilding this area will be undertaken. With cameraman Kripal Singh at Tapovan, Chamoli, Uttarakhand, Gaurav Sawant for India Today. And joining me on India First is Captain Ajay Sangwan of the Field Engineer Regiment on Ground Zero. He was amongst the first responders here. Captain Sangwan, day 3 coming to an end. Are you disappointed that we haven't been able to reach those inside? What are the challenges that you're facing, sir? As of now, we cannot use the word disappointment. We are aware that the size of the tunnel is 8 meters into 7 meters and the sheer volume of slurry which has to be removed is humongous. The way we are going, we are working 24/7 with having 3 JCBs in reserve and 2 into front loaders working. We are having extra workers here. Okay. Also, we are having defense personnel using our machinery, our own engineer machinery to clear the slurry. So when all of this is happening, we still haven't been able to reach there. What is the enormity of the challenge that you face? That's point 1. And point 2, do you require anything else? Do you require additional dozers or earth moving equipment? Do you require something else here? Even after working 24/7, we know that our pace is slow, but we are sure in due time we'll be able to reach. As far as machinery is concerned, the sheer size, the 8-meter width of the tunnel is not enough to employ 2 into dozers, 2 wheel loaders.
That's why we have kept our machinery at reserves to cater for any breakdown. But as far as demand of extra machinery is there, that is not there. Okay. So for the moment, many thanks for joining me here on India Today. I wish you all the best. You're working virtually 24/7. Very close to midnight, and this team, we've been watching them for the past 2 days. Till late in the night, they continue to work almost without taking a break, and then another team takes over in the morning. So they're working in shifts. Today, there was an experiment with a second route, with an alternate route. So you had troops of the Garhwal Scouts. They tried to rappel down virtually, we're told, more than 100 feet and try and dig a hole in the tunnel and try to access the tunnel through that route. That mission has met with partial success because there's almost 50 meters of slush in one part of that area. But unmanned aerial vehicles were launched. There is some imagery that's available. Let's take a look at this report about the second axis, the experiment with the second axis. Rescue effort at the Tapovan tunnel in Uttarakhand have hit a wall, a massive pile-up of silt and other rubble that the flood waters brought. Since Sunday, the teams have been battling to clear the mountain of debris at the tunnel. The Indian Army is now trying an alternate approach to the tunnel, where over 30 men are believed to be still trapped. Utilization of mechanical means in the form of dozers and plant equipment to take out the slush which had gone into the tunnel. Now we have adopted a new approach wherein we are trying to drill a hole from top of the tunnel and try to get inside from top so as to rescue the people who are trapped inside. Multiple agencies are working to find a second approach to reach the trapped workers. बीच में ऐसा स्टेज था कि पूरा छत तक भरा हुआ था टनल के, तो वो जो है इसलिए आज हमने प्लान किया है कि किसी तरह से जो 180 मीटर्स के बाद एक राइट में टनल जाती है 540 मीटर्स, उस पे कहीं से कि कुछ शाफ्ट लेकर के उसमें अल्टरनेटिव एंट्री की जाए जिससे अंदर के हालात पता चल सके. Garhwal Scouts commandos have been tasked with finding the second access into the tunnel, rappelling 200 feet to drill a hole into it. The main operations are being launched on this escape tunnel. We tried in the morning. We thought we must look for an alternate approach also. So today morning, my best of the mountaineers with the rescue with their equipment, they came rappelling down to the mouth of this SFT tunnel. So it was they rappelled around 150 odd meters and they tried to enter inside this slush, and they thought they were looking for whether there is a inlet or whether there is space available for oxygen to enter inside, or whether there is space available for our own troops, Marcos or any special troops, they can enter inside from this tunnel and come to this point. That is where you see, the water came gushing down from that area, completely wiping away this dam, and the slush, by some accounts more than 35 feet in height, it entered this tunnel from here, and this access is also blocked. You can see the Garhwal Rifle, the Garhwal Scouts trying to rappel down at this point of time. The Indo-Tibetan Border Police has set up its control room and 450 personnel of the force engaged in rescue and relief operations. 5 National Disaster Response Force teams, which have also reached the place of the incident, are actively looking to make progress. 8 teams of the Army, including 1 engineer task force, are involved in the operations at Tapovan. An elite diving team of Marine Commandos of the Indian Navy have also reached the site. Marine Commandos, they operate in underwater and under difficult conditions. And the situation which we are anticipating, in case there is some fluid-like situation available, or they get any pocket, or they have a capability and capacity to enter into it. With every passing minute, the challenge is getting tougher. But on the ground, nobody is giving up. The single aim of multiple teams stationed there is to get into the tunnel and get our men out alive. With Gaurav Sawant in Chamoli, Uttarakhand, Bureau Report, India Today. 197 people continue to be missing in the Uttarakhand disaster. The Union Home Minister Amit Shah made a statement in both houses of parliament. 20 bodies have been recovered so far. Of course, these figures are expected to change with more information filtering in. The Home Minister gave details
not just of the disaster, but also about steps that are being taken by the central government and the state government for not just the recovery of the people who are trapped inside this tunnel behind me, but also across the state. आईटीबीपी ने अपना कंट्रोल रूम वहां स्थापित कर लिया है और उनके 450 जवान सभी जरूरी साजो सामान के साथ घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की 5 टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और राहत और बचाव अभियान में लगी हुई है। आर्मी की 8 टीमें, जिसमें एक इंजीनियरिंग टास्क फोर्स भी शामिल है, घटनास्थल पर बचाव कार्य कर रहा है। एक मेडिकल कॉलम और 2 एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर तैनात है। नेवी की एक गोताखोर टीम भी घटनास्थल पर तैनात की गई है। एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टरों को भी इस कार्य में लगाया गया है। जोशीमठ में भी प्रशासन द्वारा एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। घटनास्थल पर विपरीत परिस्थिति में भी घटना के बाद से ही लगातार राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया था। दिनांक 7/2/21 को सुबह लगभग 10 बजे उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा की एक सहायक नदी ऋषिगंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में एक हिमस्खलन की घटना घटी, जिसके कारण अचानक काफी वृद्धि हो गई। ऋषिगंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण आई बाढ़ से 13.2 मेगावाट की कार्यरत छोटी जल विद्युत परियोजना पूरी बह गई। इस अचानक आई बाढ़ ने निचले क्षेत्र में तपोवन में धौलीगंगा नदी पर स्थित एनटीपीसी की निर्माणाधीन 520 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को भी नुकसान पहुंचाया है। उत्तराखंड सरकार ने यह बताया कि बाढ़ से निचले क्षेत्र में अब कोई खतरा नहीं है और साथ ही साथ जल स्तर में भी कमी आ रही है। 7 फरवरी 2021 के उपग्रह डेटा के अनुसार ऋषिगंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 5600 मीटर ऊंचाई पर एक ग्लेशियर के मुहाने पर हिमस्खलन हुआ, जो ग्लेशियर लगभग 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का था, जिसके कारण ऋषिगंगा नदी के निचले क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की परिस्थिति बन गई। उत्तराखंड सरकार से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अभी तक 20 लोगों की जानें जा चुकी हैं और 6 लोग घायल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 197 व्यक्ति लापता है, जिसमें एनटीपीसी के निर्माणाधीन परियोजना के 139 व्यक्ति, ऋषिगंगा कार्यरत परियोजना के 46 व्यक्ति और 12 ग्रामीण शामिल हैं। राज्य सरकार ने यह सूचना विभिन्न स्रोतों के माध्यम से इकट्ठा कर दी है, जिसमें परिवर्तन संभव। And on India First, we now bring you a story of hope. The story of Rakesh Bhatt of Joshimath. He was trapped on the other end of the tunnel, but after several hours, he along with 11 others were rescued by the team of the Indo-Tibetan Border Police and others who were engaged in the rescue operations. Listen in to his story. This story does give hope to families of those who may be stuck inside here. And that's the story of hoping against hope for survival. India Today's Meenakshi Khandwal brings us this report from Joshimath. उम्मीद की एक किरण ये थी कि वेट किया हमने, वहां पे रुके रहे और आधा 1 घंटा तक पानी फिर अंदर आता रहा। फिर एक बार पानी रुकना शुरू हो गया, पानी रुका, फिर हमने धैर्य रखा कि हमने जल्दबाजी नहीं किया। काफी देर तक एक जगह पे खड़े रहे, सरिया पकड़ के, फिर हमारे पास जेसीबी थी, उसके छत पे चढ़ गए थे हम। तो धीरे धीरे पानी का लेवल कम होने लगा, कम से कम 2-2.5 मीटर पानी हमारे छाती तक पूरा पानी भरा था। और फिर हमने जब पानी कम होने लगा, फिर हमने एक दूसरे को आवाज लगाई, एक दूसरे का नाम लिया, तो उन्होंने बोला हम एक साथ ये हैं और अगल बगल ही है। तो हमने कहा सब एक साथ इकट्ठा हो जाओ। और विनोद ने कहा कि सिग्नल आ रहा है, किसको फोन करना है। फोरमैन साहब ने कहा कि पीडी साहब को फोन करना है, डायरेक्टर जो राकेश डिमिर जी हमारे, उनको फोन किया। तब उनको विश्वास ही नहीं आया कि एक बार टनल के अंदर पानी भरने के बाद भी आदमी जिंदा बचा है। फिर सुबह ने आईटीबी वालों को बताया कि सर यहाँ पे 12 आदमी है और उनका फोन आ रहा है अंदर से और वो जिंदा है। उस वक्त आपको क्या लग रहा था? उस वक्त ये लग रहा था, मेरा तो एक दोस्त था नेपाल का था, हमारे साथ काम करता, उसने कहा राकेश भैया मैं आज तेरे साथ मर जाऊंगा। शिवानी, जिस दौरान जब आपको इस बात की सूचना मिली कि ऐसा हो गया है कुछ,
तो आपको ये अंदाजा था कि पति वहाँ अंदर हैं और इतनी बड़ी मुश्किल? नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं था कि वो अंदर होंगे। हाँ, तो तब जब पता चला कि अंदर हैं तो सबने बोला कि सही है, वो मशीन निकाल रही है उनको बाहर। तो हमने कहा ठीक ही होंगे, पर डर तो लगी थी बहुत ज्यादा। जब ये घर लौटे हैं, जब आईटीबीपी के सेंटर से, इनको देखने के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या था, मतलब उस समय? क्योंकि जब घर से गए थे तो वो एक अलग बात थी और 2 दिन का जो ये वक्त रहा ये बिल्कुल ही अलग था। बहुत हिम्मत रखा मैंने कहा अपने को भी नहीं रोऊंगी, सास को भी नहीं, वैसे छोटा दिल नहीं करूंगी, वैसे ये बहुत डरे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने वीडियो देखा था? जो वीडियोस आ रहे थे? वीडियो देखा हमने, वो निकाल रहे थे, सबसे पहले यही निकला। हमने कहा ये बच गए, मैं यही भगवान से प्रार्थना। हमने कहा बड़ी मुश्किल से भगवान, ये भी क्या और लोग भी थे, सभी के अपने बच्चे होंगे, भाई होंगे, सभी यही प्रार्थना कर रहे हैं। हम तो यही सोच रहे हो जो मरे भी उनकी भगवान उनको भी वो दे, उनके घर में भी सुख शांति दे, उनको वो करे, धैर्य दे, और बाकी क्या हो सकता है। जो मौत के मुंह से बच के आ गए हैं वो बहुत बड़ी खुशी की बात है। अभी तो कितनी लाशें हैं वहाँ, कितने पता ही नहीं चल रहा क्या क्या हो रहा है करके। दीदी भगवान ने तो मेरे बच्चा घर ला दिया। ऐसा तो किसी माँ के साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कोई ऐसी बात या कोई ऐसा मैसेज आप उन फैमिलीज को देना चाहेंगे जिनके लोग अभी फंसे हुए हैं, उनको थोड़ी हिम्मत, आप कुछ भी कहकर? हाँ, हमने एक बार सुना था हिमाचल में कि 9 दिन के बाद टनल के अंदर से आदमी निकाले थे जिंदा। 9 दिन के बाद टनल से आदमी निकाले थे जिंदा। तो उनके परिवार वालों को ये मैसेज है कि अभी धैर्य धारण रखें, कि सोचेंगे क्या पता अगर भगवान कुदरत उनको भी देख सकता भगवान, तो क्या पता वो सही निकल पाए। Now, one of the biggest challenges inside this tunnel is the slush that keeps coming each time people try to move in, rescuers try to move in, and a lot of the work has to be repeated again and again. But today, just a short while back, the NDRF sent in a drone, an unmanned aerial vehicle with cameras for an assessment of the situation on ground. Those images are being studied to chart out the next course of action. Just a short while back, I spoke to the Deputy Inspector General and Commandant of the NDRF teams on ground. Let's listen in. With me is Mohsin Shahidi. He is the DIG of NDRF, PK Tiwari, the Commandant of this team, and Aditya Pratap Singh, the Deputy Commandant, and the entire team. Mr. Shahidi, if I could ask you first, it's day 3 virtually ending and there is no success in reaching the survivors so far. What are the challenges that you're facing? Well, you see, the tragedy that unfolded on 7th, it covered roughly about 25 kilometers in less than 20 minutes. So that has created 2 challenges for us. One is to extricate the dead bodies from the rubble in the river basin. That will take some time. It's a very tedious job. In fact, today only we have started the process from the Rini village, which is the tragic point, and we discovered 4 bodies. The second and the more important challenge for us is inside the tunnel, where 34 people are said to be trapped in a section of the tunnel. We are at the moment taking out the rubble. It's a huge deluge inside, and tons of earth has already been taken out. We have progressed slowly. Now it is speeding up. We also pressed our UAVs into surveys to take a good appreciation of the situation. Okay. And all the teams are in tandem, working day and night. So when the UAV was sent in, Mr. Tiwari, what did the UAV see? What have you been able to assess from those pictures? Actually, due to slush surface being marshy, it was very difficult to go inside. Beyond the point this debris was cleared, so we have tried this drone, and that has given a clear picture of inside view, not far away, but that has given us hope to go inside and get that point which we are looking for. Yeah. Okay. Aditya Pratap Singh, you've led the team inside.
what have you been able to locate? Are there survivors? Apparently there's a big truck or a dozer and some smaller vehicles. Are there survivors behind it? Could the drones spot something? We are using every technology which we are having right now, and our main strength is the highly motivated troops. We are doing all-out efforts, and our efforts will be fruitful one day. Okay, you're hopeful that the effort will be fruitful, but sir, it's a race against time. Are we in a position to say, at least now, that at this point of time, that we will be able to locate survivors inside? Some technology was employed with radars, underslung helicopters this morning to find out air pockets. Are we aware of that assessment just as yet? Are we hopeful of an air pocket inside? Yes, that assessment started today only, and that will give us some more, information on which we can plan our action. And I'm hopeful that from now onwards and in the coming, I think, next 10-12 hours, we'll be saving some lives. Though several villages remain completely cut off by the devastating landslide, flash flood in this area, one of the worst affected villages is the Raini village, just a little north of this area, and that village still remains cut off. As of now, people are being supplied using helicopters, but India Today's Ashutosh Mishra is on ground zero, and he sent us this report about steps being taken for relief and rehabilitation. People living in Raini recall the horror after a part of a glacier broke away on Sunday, causing massive floods in Uttarakhand. पता ना हवा से मैं उड़ के इधर तक पहुंच गई। उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा। भयंकर सैलाब एक ही बार देखा मैंने, इतने आते हुए। उसके बाद मेरे को हवा नहीं। तो आपकी साथ जो आपके साथ थी वो कहाँ थी? वो उसी समय दब गई थी, एक ही सैलाब से। और आप उनको बचा नहीं पाई? ना। खुद को कैसे बचाया आपने? मैं अब पता नहीं, मेरे को भगवान ने बचाया होगा। मैं तो हवा से उड़ के आई। Many people are still missing. Villages are still reeling from the tragedy that struck them. खाली रह रहे डर से काम रहे, क्या करना, आ जाना। पूरा दिन कैसे बीतता है? नहीं बीत रहे, कहाँ डर से पागल जैसे हो रहे। Fear pervades Raini village. Many have moved to the upper reaches along with their children and cattle. बात तो 2 दिन पहले हुई थी बात मम्मी से, बन मैं कहा मुझे बोला हमें टाइम नहीं लगा, घर में गाय है, कैसा आऊंगा हम घर। 2 साल से मम्मी को नहीं मिला मम्मी से। आपकी माता जी थी वो? हाँ, मेरी माता जी को नहीं देखा 2 साल से। कौन में थी आप? मैंने बैराज टूटते हुए देखा, वहाँ लोगों को उड़ते हुए देखा मैंने। हम देख हमारे तो हाथ पैर टूट गए उसी टाइम पे। मैंने बोला कि मेरे मायके वाले सब मर गए बोल के आज। पर कोई बात नहीं, भगवान की दया से जितने बचे हैं कोई बात नहीं, इनको तो विस्थापित मिलना चाहिए। ऐसे खतरे में रह सकते हैं ये? ऐसे खतरे में तो नहीं रहना चाहिए भाई इनको। It's not just locals who are missing family members. Salik has come down all the way from Kashmir to find his father, the general manager of the Rishi Ganga project. मेरी बात हुई थी, परसों हुई थी, अराउंड 10-15 के करीब इन द मॉर्निंग। उसके बाद 10:30 बजे, जैसे कि ये लोग कह रहे कि फ्लड एंड ऑल दैट स्टफ केम, तो उसके बाद मेरी बात नहीं हुई उनसे। आई केम ऑल द वे टू सर्च माय फादर। आई होप कि वो मिल जाए। There is no trace of more than 100 people. Rescue teams have fanned out across the region, but time is running out. In Raini, traumatized families are clinging on to hope with a prayer on their lips. Bureau Report, India Today. Uttarakhand Chief Minister Trivendra Singh Rawat reviewed the relief and rehabilitation measures. He's visited several villages, and my colleague Manjeet Singh Negi caught up with the Chief Minister on steps that are being taken and steps that need to be taken in the days ahead. क्या हालात हैं, किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, एक एरिया हमारा जो मलारी मार्ग है, रैनी मलारी मार्ग, उस पर जो पुल बह गया था, आज वहां पर जिप लाइन वहां पर फिक्स हो गई है
और उससे आवाजाही प्रारंभ हो गई है। तो एक चिंता थी कि हेलीकॉप्टर से अगर हमको वहाँ राशन भेजना है, कोई सामग्री भेजनी है, तो कितना एक लिमिट तक ही उससे भेजा जा सकता है। फिर वो मौसम पर निर्भर करता है, बहुत संकरी घाटी है, तो उसमें हेलीकॉप्टर कितनी देर फ्लाई कर पाएगा, ये भी एक चिंता की बात थी। और उसमें एक लिमिटेड ही उससे सेवा की जा सकती थी। तो जिप लाइन बनने से आज हमारे पास एक वहाँ पर किसी को आना जाना है, सामग्री वहाँ तक भेजनी है, तो एक तो उसके लिए हमारे पास सुविधा हो गई और हमारी क्षमता बढ़ गई है। जो इलाका है वहाँ जो लोगों से मैं मिला हूँ, तो वहाँ इस तरह की ऐसी कोई समस्या नहीं है। ये जरूर है कि वो मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़ा परेशान हैं, कुछ लोग थोड़ा परेशान हैं, तो उसके लिए वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम है। फिर अब जिप लाइन बन गई है, तो जैसे ही जनजीवन सामान्य होगा तो उनका जो मानसिक जो उनको अभी तकलीफ है वो भी धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। वहाँ पर कुछ परिवार ऐसे कि जिनके घर टूट गए हैं, तो मैंने जिलाधिकारी को कहा है कि उनको घर बना कर दिया जाएगा और उसके भूमि का चयन जितनी जल्दी हो जाएगा तो वहाँ पर उनके आवास बना दिए जाएंगे। जो हेतुक जो तात्कालिक जो सहयोग की आवश्यकता होती है वो वहाँ पर दे दी गई है। 3 days after the disaster, several people continue to be missing. The death toll is also steadily rising. Teams of the NDRF are now looking for bodies not just along the river but also in other areas. Locals are also joining in to help, but at this point of time the wait is unending and really troublesome for the next of kin of those who continue to be missing. Salik Zargar is desperate. He hasn't heard from his father, Basharat Zargar, since Sunday, the day the floods hit. The elder Zargar is the general manager of the Rishi Ganga hydro project that was totally washed away. I hope सब सही हो जाए, सब ठीक से हो जाए और वो जल्द से जल्द मुझे मिल जाए। अधिकारियों के साथ वो मतलब आई टॉक टू कंपनी पीपल, जो उनके एमडी वगैरह है, चेयरमैन है कंपनी के, बट उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं कंपनी की तरफ से। दे आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स एट ऑल। Many of those working at the project are untraceable. Among them are 10 people from Uttar Pradesh's Saharanpur. A control room has been set up in Haridwar to coordinate efforts to trace those who are missing. सभी एसडीएम्स और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो उनके परिवारीजनों से संपर्क कर रहे हैं। मैं भी उनके परिवारीजनों के संपर्क में हूं। जनपद सहारनपुर में भी यहाँ पर कलेक्ट्रेट में भी एक कंट्रोल रूम स्थापित है, वो भी कार्यरत रहेगा। In Bihar Chhapra, a family is distraught from Munna Singh's phone call, which was abruptly cut on the morning of Sunday. हमें कुछ सूचना मिली कि नहीं अभी तक? अभी तक कुछ नहीं है मिला। सारा लोग मिल गए, हमारा राम नहीं खन मिला। रोज मतलब 10-12 बार बात होती थी। हाल चाल घर का पूछते रहते थे सब। जी। ज्यादा देर नहीं बात करते थे, एक ही मिनट बात करते थे, पर हर समाचार लेते थे घर का। Multi-agency rescue teams have spread across the area of devastation. Every possible technological help is being taken to trace those who are missing. Meanwhile, in Srinagar, Saharanpur, Chhapra, anxious families are hoping that their prayers are answered. With Ashutosh Mishra in Chamoli, Bureau Report, India Today. Rescue teams are hoping against hope there will be headway in the next 12 hours. They will be able to reach that T point at 180 meters and hopefully there will be an air pocket and they will find survivors. We continue to report from ground zero, but that is all I have time for on this India First special from the Tapovan tunnel in the Chamoli district of Uttarakhand. Many thanks for watching. News and updates continue on India Today. Stay with us. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.